Good morning, students. Today we are going to see one more problem on depreciation under the written down value method, that is reducing balance method or your diminishing balance method. Okay, so in this method the value of depreciation that is calculated, it is calculated on the written down value. Okay, so here's the problem. Sharbila Automobiles Limited, Thane, purchased a machinery for rupees 80,000 on 1st July 2015. On 1st October 2016, the company purchased additional machinery costing how much? 30,000. ओके, तो उन्होंने क्या किया, फर्स्ट एक मशीनरी खरीदा था, इट वॉज ऑन 1st July 2015. अगेन ऑन 1st October 2016 they purchased additional machinery for rupees 30,000. On 31st March 2018, the machinery which was purchased on 1st July 2015, okay, जो machinery 2015 को purchase किया था, it was on 1st July, it amounting was how much? 80,000. वॉज बिकेम एब्सोल्यूट, मतलब वो उसका लाइफ ख़त्म हो गया, एंड सोल्ड फॉर रुपीज़ 65,000. हाउ मच इट वॉज सोल्ड फॉर? 65,000. डेप्रिसिएशन वॉज प्रोवाइडेड ऑन एनुअली ऑन 31st March the rate of 10% per annum on the reducing balance method. Okay, so depreciation का यहाँ पे परसेंटेज दिया है, कितना है? 10%. So prepare machinery account, depreciation account for the period 2015-16, 16-17 and 17-18. Okay, तो हमें 3 बरस का डेप्रिसिएशन निकालना है. सो फर्स्ट वी विल सी वेदर देर इज़ अ प्रॉफिट और अ लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी. ओके, नाउ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीनरी ऑन 1st July 2015 कितना है? 80,000 है. ओके, एंड इट वॉज सोल्ड ऑन विच डेट? इट वॉज सोल्ड ऑन 31st March 2018. सो हमें 15 से 16, 16 से 17, 17 to 18 इतने सेल का हमें क्या करना है? वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन. नाउ दिस मशीनरी वॉज परचेज ऑन विच डेट? इट वॉज परचेज ऑन 1st July 2015. और हमारा ईयर एंड कब होता है? इट इज़ एंडिंग ऑन 31st March 2018. ओके, तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेशन देखेंगे पहले महीने का. सो इट इज़ हाउ मच? 80,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 मल्टीप्लाई बाय हाउ मेनी मंथ्स इट इज़ यूज. तो हम लोगों ने कब खरीदा था? इट वॉज परचेज ऑन 1st July. सो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. सो इट वॉज यूज फॉर 9 months आउट ऑफ 12 months. ओके, सो इट वॉज यूज फॉर 9 months आउट ऑफ 12 months. ओके, तो दिस इज योर कैलकुलेशन. सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू द कैलकुलेशन. तो हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा? 3 4 2,000. So 2 multiplied by 3,000 will give you, sorry, 2,000 multiplied by 3 will give you 6,000. So पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना है? 6,000. So less depreciation for 2016 because when the year starts at 2015 it will get over by 2016. So 2016 कितना हुआ? 9 महीने यूज किया. So how much is the depreciation? 6,000. So 80,000 minus 6,000 will give us 74,000. Okay, so this is the written down value on 1/4/2016. अभी हम लोगों ने मशीनरी कब सोल्ड किया? इट इज़ सोल्ड ऑन 2018. सो हमें और एक साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. नाउ दिस ईयर द मशीनरी इज़ यूज फॉर फुल ईयर, डेट इज़ फॉर फुल 12 months. तो पूरा डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है, डेट इज़ हाउ मच? 10%. सो रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन 1/4/2016 इज हाउ मच? 74,000. तो हम लोग, हमारा जो डेप्रिसिएशन है इट विल बी कैलकुलेटेड ऑन द रिटर्न डाउन वैल्यू. So 74,000 multiplied by 10/100 will give us 7,400. ये क्या हुआ? हमारा डेप्रिसिएशन हुआ. So less depreciation for 2017 for 12 months is 7,400. So deduct 74,000
1000 से 7400 डिडक्ट करो, कितना आएगा 66,600. नाउ ऑन दिस वी हैव टू कैलकुलेट अगेन डेप्रिसिएशन, बिकॉज हम लोगों ने जो मशीनरी परचेज किया था इट वाज सोल्ड ऑन 31st मार्च, मतलब एग्जैक्टली ईयर एंड पे उसको सोल्ड किया. सो लेस डेप्रिसिएशन 2018 12 मंथ्स के लिए कितना है 66,600 माइनस 6,660. कैसे 66,600 मल्टीप्लाई बाय 10/100 द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन विल गिव यू 6,660. तो हम लोग जब सेल कर रहे हैं उस दिन उसका वैल्यू कितना है 66,600 माइनस 6,660, कितना आया 59,940. So this is the depreciation value, the written down value after calculating depreciation on 31st March 2018. Now this is the value of the machinery, but we have sold at what price? We have sold at 65,000. so selling price कितना है 65,000. तो actually written down value कितना था 59,940, और हम लोगों ने सोल्ड कितने भी किया 65,000 को. डेट मीन्स वी हैव अर्नड अ प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितना है 5,060. सो दिस इज द प्रॉफिट विच वी हैव अर्नड बाय सेलिंग द मशीनरी. ओके, हम लोगों ने ज़्यादा में सेल किया, कितना ज़्यादा 5,060 रुपीज़ ज़्यादा सेल किया है. ओके, next is the depreciation, the machinery which is purchased additionally on wait, the machinery which was purchased additionally on 1st October 2016, उसका भी हमें क्या करना है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है. सो कैलकुलेशन ऑफ एडिशनल मशीनरी डेप्रिसिएशन और कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन एडिशनल मशीनरी. ओरिजिनल कॉस्ट ऑन 1st October 2016 कितना है 30,000. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑफ द मशीनरी फॉर द ईयर 2016-17. अभी 16-17 के लिए कितना यूज़ किया उसने लास्ट ईयर. व्हाट इज द मशीनरी का प्राइस कितना है 30,000. सो ऑन दैट 10% डेप्रिसिएशन, सो 3,000. ना दिस 3,000 हम लोगों ने मशीनरी कितने टाइम के लिए यूज़ किया. इट इज़ ऑन 1st October to November, November to December, December to Jan to Feb to March, March to 31st March. Okay, so 6 divided by 12, half. Okay, so half of 3,000 is 1,500. So depreciation for the year 2016-17 कितना है 1,500. Now depreciation for the next year, okay, that is for the year that is for the depreciation for the year 2017-18. ओके, सो 17-18 के टाइम हमारा डेप्रिसिएशन कितना है. द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन इज हाउ मच 10%. ओके, तो वी हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन ऑन दैट मशीनरी. ओके, तो हमारा डेप्रिसिएशन कितना है. लेट्स कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन अमाउंट. नाउ लेट्स कैलकुलेट द डेप्रिसिएशन ऑन दैट. नाउ सी हियर, now the value of the machinery is 3,000, right? So on this for the year 2016-17 हमारा डेप्रिसिएशन कितना है 1,500. so 0,058 28,500. now on this is the written down value on 31st March 2017. ये हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू है. ना ऑन दिस वी हैव टू कैलकुलेट 10%, दैट इज ऑन 28,500 हम लोगों को क्या करना है उसके ऊपर 10% डेप्रिसिएशन निकालना है. सो व्हेन वी कैलकुलेट डेप्रिसिएशन 10% वी विल गेट 2,850. ओके, सो टोटल डेप्रिसिएशन कितना है उसका 4,350. so this is the depreciation that is calculated of the whole year. so written down value on 31st March 2018 will be 25,650. so this is the written down value.
Now what we are going to do, we will be doing the machinery and the depreciation account. So let's start. In the books of Sharmila Automobiles Limited Thane, machinery account, date per debit credit, date particulars, date particulars JF amount rupees, date particulars JF amount rupees. So this is the format of how you are going to prepare the machinery account, same as your ledger account you are supposed to prepare. Now first thing is the purchase entry. So when we purchase, the entry is machinery account to bank account. Okay, so 2015 July 1 to bank account 80,000. Now at the year end we are supposed to calculate depreciation. तो हम लोगों ने depreciation कितना calculate किया, 6,000. So 2016 31st March by depreciation account 6,000. ओके, सो रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है, सॉरी द रिटर्न डाउन वैल्यू कितना है, 74,000. सो 31st March 2016 बाय बैलेंस कैरिड डाउन 74,000. सो टोटल ऑन बोथ द साइड इज हाउ मच, 80,000, 80,000. Now this written down value which we have calculated has to be brought down for the next year, that is year start of the year, and our year starts on April 1. So 2016 April 1 to balance brought down 74,000. Now on this 74,000 we have to first calculate depreciation. Okay, तो हम लोगों को पहले, उसके पहले जो मशीनरी, एडिशनल मशीनरी जो है वो परचेज किया है उसका डिटेल्स लिखना है. सो मशीनरी अकाउंट टू बैंक अकाउंट, द मशीनरी विच इज़ परचेज ऑन 1st October 2016. सो October 1 टू बैंक अकाउंट 30,000. नाउ हम लोगों को जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा डेप्रिसिएशन कौन सा है, इट विल बी 7,400 प्लस 1,500, कितना हुआ, 8,900. So 2017 March 31st by depreciation account 8,900. So this is the depreciation amount which we have calculated of both the thing, that is 7,400 plus 1,500. So the 2017 March 31st by balance brought down because the debit side is heavier than the credit. डेबिट साइड कितना है हमारा, 74,000 प्लस 30,000 विल गिव यू हाउ मच, 1,04,000, एंड हियर इट इज ओनली 8,900. सो आवर क्रेडिट साइड इज लेस देन द डेबिट साइड. सो बैलेंसिंग फिगर कहाँ पे आएगा, इट विल कम ऑन द क्रेडिट साइड. सो March 31st बाय बैलेंस कैरिड डाउन 95,100, टोटल इज 1,04,000, 1,04,000. Now this 95,100 we have to transfer to the next year, that is 2017. So 2017 April 1 to balance brought down 95,100. Now the next thing is we have to pass the entries of the depreciation of the machinery which is sold. तो उसका depreciation कितना है, 6,660. So 31st March 2018 by depreciation account 1, 6,600. Okay, then the machinery which is sold, we sold it at 65,000. So March 31st by bank account 65,000, and the profit which we have earned, the profit which we have earned will come on the debit side of the machinery account. Okay, if it is a profit. So 31st March 2018 by to profit and sale of machinery account 5,060, ये हो गया सोल्ड. नाउ वन मोर मशीनरी, एडिशनल मशीनरी विच वॉज परचेज, उसका अभी तक क्या है, डेप्रिसिएशन इज देयर बिकॉज दैट मशीनरी इज स्टिल देयर इन आर कंपनी. कितना है, 2,850. सो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 2,850. नाउ
the balance on the debit side is how much? 1,160,000, and on the credit side it is 65,000 plus 2,850 plus 6,660. So when we calculate here the machinery, once it is sold, we know it, the account gets closes. So here the written down value will be 25,650. okay, ये जो amount है यहाँ का. So 31st March 2018 by balance carried down 25,650. So balance on both the side will be 1,160,000, 1,160,000. Now this amount हम लोग क्या करेंगे? We will take it, we will bring down on 2018 April 1 to balance brought down 25,650. So this is how you are supposed to prepare the machinery account. The next account which we are supposed to prepare is the depreciation account. So let's prepare depreciation account. Depreciation account, debit, credit, date, particulars, JF, amount rupees, date, particulars, JF, amount rupees. Okay. First thing is to machinery account. कितना है depreciation here? 6,000. Okay. So 31st March to machinery 2016 to machinery account 6,000. Now this account will go to the profit and loss account. So 2016 31st March by profit and loss account 6,000. Total both the side it is 6,000, 6,000. Again for the next year the depreciation was how much? 8,900 of both the machinery, that is 7,400 plus 1,500. So 2017 March 31st to machinery account 8,900, 8,000 the profit. Now this amount we have to show it to the profit and loss account. So 2017 March 31 by profit and loss account 8,900. Total both the side 8,900, 8,900. Next is 2018. Okay, 2018 depreciation because one machinery is already 1,600, 2,850. So sorry, in March 31 to machinery account 1 6,600 to machinery account to 2,850. So both this amount will be transferred to the profit and loss account of both the machinery 2018 March 31st by profit and loss account 9,510. Okay, so here both the total 9,510, 9,510. So this is the performer, or this is the sample how you are supposed to prepare depreciation account, the solution of the problem. Okay, problem will be very simple but the solution is very big and you have to give all the details of the solution.